The bodyguard team comprises Colonel Amit Berwal, the Commandant of the President's Bodyguard, both of these senior players have represented our country a number of times in the World Cup Polo Championship. And the fourth player for the bodyguard team is Mr. Naveen Jindal, a sitting member of the Lok Sabha, three-time member of the Parliament, and also the Vice President of the Indian Polo Association. The two umpires for this match, Colonel Navjeet Singh Sandhu, former Commandant of the 61st Cavalry, and Major Raghav Raj Singh, who is a very competent polo player himself and also captain of the infantry polo team. Major Raghav Raj Singh is from the Territorial Army, and the senior most match official sitting right by my side is one of the finest polo players of India, Mr. Jay Shergill, who is a role model to any person who likes to ride horses or who would like to make a foray into the polo field. Ladies and gentlemen, the polo match is going to be played over 4 chukkers. Each chukker is a playing time of 7.5 minutes. There are short breaks between chukkers. The half-time break is slightly longer of 5 minutes. Other breaks are 3 minutes. At the half-time break, we shall witness a display by the military band of the Rashtrapati Bhavan. As you can see, they're already in their positions towards your extreme left side. The bandmaster, Naib Subedar Jaipal Yadav, is getting his team ready and alert. So we'll witness a band display during the half-time break, and the match will conclude after 4 chukkers. After the conclusion of the polo match, we are going to have a very exciting display of mounted sports. To begin with, a trick riding display. They call it trick riding, but to be precise, it is actually daredevilry on horseback. A trick riding display followed by a trick show jumping display. Again, we call it trick display because for an ordinary person, all of this looks magical. You won't be able to believe what you're seeing, but all of that is going to be real and being performed in front of your eyes at this iconic historic venue, the President's Bodyguard Parade Ground. Why is this polo field called a parade ground? Well, ladies and gentlemen, for more than 100 years, the horses of the President's Bodyguard have trained here on this ground. We'll tell you a bit about this historic regiment, which has a unique place in the entire world. I think all of you, all citizens of our country would be proud to know that the President's Bodyguard is the only airborne cavalry regiment in the world. It is an elite regiment, the senior most regiment of the Indian Army, a regiment that was raised in the year 1773, and it completed 250 years since its raising. It was awarded the President's Colors for the second time. That was last year in November 2023. So you can imagine a regiment that has lived up to its name, its heritage, and its uniqueness for over 250 years. Every soldier of the President's Bodyguard is a trained tankman, paratrooper, and equestrian rider. What is surprising and delightful is also the fact, and yet again a unique fact and feature of this elite regiment, is that every horse of the President's Bodyguard is a unique war horse, trained to perform on the parade ground, beginning from the Republic Day parade. They take part in almost 65 ceremonial parades every year. And all these war horses of the President's Bodyguard also play equestrian sports and polo and tent pegging. Just imagine the kind of training they undergo. So every horse of the President's Bodyguard is always referred to as a war horse. You are going to see them in action today, this afternoon, and some of them are absolutely remarkable and special.
Just imagine, nowhere in the world will you ever come across a horse that plays polo and does tent pegging. A horse that plays polo, does tent pegging, and takes part in a parade. So you can imagine, a horse that has to take part in tent pegging has to run at a flat-out gallop, covering almost 11 meters per second. And a horse which is trained to take part in a military parade, a national parade, has to stand motionless in attention for over 2 hours. Imagine the amount of discipline, the mental discipline, which is required to train these horses to perform their duties. Multi-talented, multi-dimensional beings, soldiers of the President's Bodyguard and war horses of the regiment. Together, they are a unique combination in the world. नमस्कार देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति अंगरक्षक परेड ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का समारोह कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। कुछ ही पलों में भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन होगा। राष्ट्रपति जी के आगमन पर आपके बाईं तरफ तैनात राष्ट्रपति भवन के मिलिट्री बैंड फैनफेयर की धुन बजाएंगे। राष्ट्रपति अंगरक्षक के सेरेमोनियल ब्यूगलर अपने अपने स्थानों पर तैनात हैं। कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया अपने बच्चों अपने बच्चों को अपने साथ रखिए। कुछ बच्चे अभी मैदान के करीब हैं। सभी माता पिताओं से निवेदन है, अपने बच्चों को अपने साथ रखिए। तो प्यारे दर्शकों, फैनफेयर की धुन के साथ आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रपति जी के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। राष्ट्रगान की समाप्ति तक सभी दर्शक अपने स्थानों पर खड़े रहें। उसके बाद प्रेसिडेंट्स पोलो कप की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले दोनों पोलो टीम्स, बॉडीगार्ड टीम और लांसर्स टीम, दोनों टीम्स का परिचय किया जाएगा और उसके बाद मैच की शुरुआत होगी। आप देख रहे हैं, आपके सामने टीम्स तैयार हैं। एक बार फिर सभी दर्शकों से निवेदन है कि जब फैनफेयर की धुन के साथ राष्ट्रपति जी के आगमन का ऐलान किया जाएगा, आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान की समाप्ति तक अपने स्थानों पर खड़े रहें। राष्ट्रगान के बाद प्रेसिडेंट्स पोलो कप की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले दोनों पोलो टीम्स के हर खिलाड़ी से आपका परिचय कराया जाएगा और उसके बाद पोलो मैच शुरू होगा। आज का पोलो मैच प्रेसिडेंट्स पोलो कप 4 चक्कर का गेम है। हर चक्कर में 7.5 मिनट का खेल होता है और चक्कर्स के बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स होती हैं। हाफ टाइम की ब्रेक दूसरे और तीसरे चक्कर के बीच में जब 5 मिनट की हाफ टाइम ब्रेक होगी तो राष्ट्रपति भवन के मिलिट्री बैंड द्वारा एक शानदार बैंड का प्रदर्शन आपके सामने किया जाएगा। पोलो मैच की समाप्ति पर
राष्ट्रपति अंगरक्षक के जांबाज सवार आपके सामने बहुत ही विशेष प्रदर्शन करने वाले हैं आज। सबसे पहले ट्रिक राइडिंग का प्रदर्शन होगा और उसके बाद ट्रिक शो जंपिंग का प्रदर्शन। सभी प्रक्रियाओं के बाद समारोह के अंत में पुरस्कार वितरण समारोह होगा, जब सभी खिलाड़ियों को और प्रदर्शनकर्ताओं को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पुरस्कार प्रदान करेंगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि समारोह के दौरान, मैच के दौरान और जब भी खेल के मैदान पे कोई भी प्रक्रिया हो, आप सब कृपया अपने स्थानों पर बने रहें। दोस्तों, भारत की माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में समारोह की गरिमा को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
Ladies and gentlemen, in a few moments from now, we shall witness the arrival of the Honorable President of India. भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू Teams line up for the ball throwing, please. सभी दर्शकों से निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ मैच की शुरुआत का अभिवादन करें। Your kind attention, umpires. Please line up the teams for the team introduction. Ladies and gentlemen, we are all set to introduce to you all the players and match officials lined up before you to play for the President's Polo Cup 2024. First, let me call out the names of the players in blue shirts playing for the Lancers team. At number 1, we have Dafadar Sukhjeet Singh, the President's Bodyguard. एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी प्लेयर्स का स्वागत करें। दूसरे नंबर पर खेल रहे
Delhi. Playing in the white helmet, we have Mr. Jaisal Singh, a nature conservationist, a philanthropist, author, industrialist, and a very passionate polo player. And playing at number 4 is a remarkable polo player who's represented our country 3 times in the Polo World Cup, Bhavani Singh Kalvi. In the red shirts, we have the Bodyguard team. Playing at the number 1 position, leading his regiment by example, Colonel Amit Berwal, Commandant of the President's Bodyguard. Playing at number 2, ladies and gentlemen, is the Vice President of the Indian Polo Association, Mr. Naveen Jindal, a 3-time member of the Lok Sabha and also a sitting member of the Lok Sabha. This is something unique about the sport of polo in India, where we have the leadership of our National Sports Federation taking part at the highest level of the sport in our country. And the next 2 players for the Bodyguard team, well, they are the most accomplished players in the present generation. I'd first like to introduce Mr. Simran Singh Shergill, who is a winner of the Arjun Award for Excellence in Polo, and Mr. Sameer Suhag, also winner of the Arjun Award for Excellence in Polo. Both of these players have represented our country in the Polo World Cup Championship for a number of years. The 2 umpires for this match, Colonel Navjeet Singh Sandhu, former Commandant of the 61st Cavalry. In the white helmet, we have Major Raghav Raj Singh from the Territorial Army, who's also, in fact, the captain of the infantry polo team. And the match referee right by my side is Mr. Jay Shergill. Ladies and gentlemen, the match is about to start. The umpires taking their place. You can see that's Colonel Navjeet Sandhu throws in the ball. The ball is in play now. This is the President's Polo Cup 2024. Gets underway with the backhander being attempted. The ball is now with Sameer Suhag. Sameer playing at number 3 for the Bodyguard team. He takes a nice gentle tap, takes the ball across the center line. He's passing the ball up to Simran Shergill. Simran keeping the Lancers team away. But we have the Lancers team, Sukhjit. That is Dafidar Sukhjit. A nice pass, long shot there by Bhavani Kalvi. Sukhjit just missing out on that opportunity, and Simran Shergill, oh, look at that strike by Simran Shergill. He's given a nice pass to Naveen Jindal. Naveen Jindal strikes the ball. The Bodyguard team is in attack. They've got an opportunity here. He'll have to cut the ball hard. He's cut it. Is the ball going to go towards the target? It's going slightly wide, but Naveen Jindal has tapped the ball. Just missing by a few inches. Missed the target just by a few inches. So, ladies and gentlemen, a few seconds for the play to restart as the umpire is going to signal for our spectators who are new to polo. This match will be played over 4 chukkers. Each chukker has a playing time of 7.5 minutes. Short breaks between chukkers. This is a nice pass given. Vani Kalvi strikes it hard. This is Dafidar Sukhjit. Oh, Dafidar Sukhjit Singh of President's Bodyguard in attack for the Lancers team. It is Sukhjit. Sukhjit strikes. He's got an opportunity to score for the Lancers team. He strikes once again. The ball just missing the target by inches. For our spectators who are not familiar with the settings of a polo ground, very quickly let me take you through the settings here. This field measures 300 yards from left to right, and also 300 yards from right to left. It's almost 180 yards in width. The goal posts are 8 yards apart. And look at the goal posts. Those 2 pillars you can see on extreme right and left. Well, I'll tell you more about that. This is Simran Shergill, who's given a nice pass to Sameer Suhag. Sameer Suhag for the Bodyguard team takes the ball close to the scoreboard. Sameer Suhag strikes. He's being pursued there. Sameer strikes, but he misses out on that strike. Simran Shergill quickly comes and pounces on the ball. And the ball is picked up. A whistle by the umpire signaling a foul. So, ladies and gentlemen, this is a field that measures 300 yards by 180 yards. The goalposts on the extreme left and right, you can see those pillars, which are the goalposts, are 8 yards apart, but they're made out of special collapsible material. Just in case there is a collision between the goalpost and a player or a horse, the player or the horse will not get injured.
Well, the design is such that the goalpost will get injured, but not the player, not the horse. And the goalposts are 8 yards apart. Polo is the only other sport, apart from rugby, where the goalpost doesn't have a top bar. There's something going on towards your extreme left. Can you see? A rider in a yellow turban. He's warming up one of the polo ponies that is going to come onto the field in a short while from now. दोस्तों, आप अपने बाईं तरफ देखिए किस तरीके से उस शानदार पोलो के घोड़े को वार्म अप किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही पोलो की प्रक्रिया शुरू होती है ना, तो घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ना पड़ता है. तो इसलिए जब भी पोलो मैच होता है तो मैच के दौरान, उससे पहले और बाद में फील्ड के बाहर बहुत सारी हरकतें हो रही होती हैं. अगर आप मैदान के आगे देखें तो वहां पे दोनों तरफ आपको घोड़ों के साथ उनके ट्रेनर्स और हेल्पर्स दिखाई देंगे. The umpire, Colonel Navjeet Sandhu, approaching the match referee. Slight break in play there. The umpire, Colonel Navjeet Sandhu, briefing the match referee that a couple of players asked for a few seconds to go and change over to different horses. So, ladies and gentlemen, this match will be played over 4 chukkers. Each chukker has a playing time of 7.5 minutes. Every time the umpire blows the whistle, the clock comes to a standstill. If you look across the polo field, right down the center line, you can see the scoreboard there. Red for the Bodyguard team, blue for the Lancers team. First chukker underway with 4 minutes and 41 seconds of play left in this first chukker. This is Simran Singh Shergill getting ready to strike the ball close to the scoreboard. From the far side he strikes. It's a nice long shot covering almost 100 yards. He's given a brilliant pass to Samir Sohag. He's right in front of the goal mouth. The ball takes a little deflection. What a nice pickup by Bhavani Kalvi. Oh, look at that. Look at the speed of Bhavani Kalvi at a flat-out gallop. He's in attack for the Lancers team. Simran Shergill getting ready to defend with the backhander. Simran strikes. Simran strikes with the backhander, changes direction. Deepak Udar on the ball, keeping the ball in play with the backhander. The ball comes back right in front of the goal mouth. And Bhavani Kalvi once again turns around. He's got an opportunity. He's right there. And it's a cracking shot through the goal mouth. प्यारे दर्शकों, बड़ी मेहनत से ये पहला गोल स्कोर किया. आप लोग भी जरा मेहनत से ताली बजा दीजिए, मजा आएगा. हमें बड़ी खुशी है, यहाँ पे इतने सारे बच्चों को हम देख रहे हैं. हमें बड़ी खुशी है, इन सभी बच्चों का स्वागत किया है हमने. और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपकी तालियों की गूंज से प्लेयर्स के हौसले बुलंद हो जाते हैं और घोड़ों की रफ्तार भी बढ़ जाती है. अभी देखिए, अंपायर ने वहां पे अपनी विसल से संकेत दिया है, और जब भी अंपायर अपनी विसल से संकेत देंगे, वहां पर स्कोर बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि घड़ी रुक जाती है. कर्नल नवजीत संधू, उनका इक्विपमेंट का एक भाग जमीन पे गिर गया था, इसलिए उन्होंने विसल बजाकर गेम को रोका और अब अपने घोड़े पे एक बार फिर सवार हो चुके हैं. हमारे दर्शकों को यह सवाल तो मन में आ रहा होगा कि कितने सालों का तजुर्बा होगा इन प्लेयर्स का. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी खिलाड़ी आपके सामने हैं, ये तकरीबन 15 से 20 साल से पोलो खेल रहे हैं. बहुत ही तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं और इनमें से कई प्लेयर्स ने, जैसे कि मैंने इनके परिचय पे आपको बताया था, ये सब भारतीय राष्ट्रीय पोलो टीम के भाग रह चुके हैं कई सालों तक. ये सिमरन शेरगिल के पास अब बॉल है. सिमरन शेरगिल के ठीक बगल में है दीपक उदार. सिमरन शेरगिल वहां कोशिश कर रहे हैं बॉल को अपने कब्जे में रखने की, लेकिन भवानी कालवी बहुत ही प्रभावशाली खिलाड़ी हैं. भवानी कालवी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग भी कर चुके हैं, बास्केटबॉल भी खेल चुके हैं और 3 बार पोलो वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में भारत की टीम का हिस्सा रह चुके हैं. और ये देखिए, एक बार फिर
लांसर्स की टीम ने बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, बैक हैंडर लगाया वहां सिमरन शेरगिल ने, बैक हैंडर के साथ दिशा पलट दी। समीर सुहाग के घोड़े के पास थी बॉल, समीर सुहाग एक बार फिर बॉल के ऊपर आ गए। समीर सुहाग बॉल को आगे बढ़ाया, दीपक उदार बॉल की तरफ बढ़ते हुए, दीपक अब अपने दाहिनी तरफ बॉल को घुमाते हुए, दीपक उदार चमकीली नीली हेलमेट पहने हुए, अब सिमरन शेरगिल ने बॉल को पकड़ लिया। सिमरन शेरगिल पास देना चाहते हैं, बैक हैंडर लगाया उन्होंने और बॉल को रोक लिया। वहां भवानी कालवी ने देखिए किस तरीके से बॉल को चलते चलते रोक लिया। देखने में बड़ा आसान लगता है दोस्तों, लेकिन जब 600 किलो के घोड़े पे आप सवार होते हैं ना, हिंदी की पुरानी कहावत है, जब घोड़े पे पूरी रफ्तार पे कोई सवार गैलप करता है ना, 11 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पर, 40 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार पर जब आप घोड़े पे गैलप करते हैं, तो हिंदी की पुरानी कहावत है ना, दिन में तारे दिखने लगते हैं। लेकिन घोड़े को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि घोड़ों को हवा से बात करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए परमात्मा ने हमारे अश्व योद्धाओं को ऐसा रूप दिया है, ऐसी दिव्य शक्ति दी है। प्ले का संकेत दिया अंपायर ने और अब देखते हैं कौन तैयार हो रहा है। ये भवानी कालवी बॉल के बगल में तैयार थे और जयसल सिंह अब अप्रोच कर रहे हैं बॉल को स्ट्राइक करने के लिए। जयसल सिंह और जयसल ने बॉल को स्ट्राइक किया, बॉल मैदान के ऊपर चल रही है लेकिन उसकी रफ्तार घटती जा रही है। वहां भवानी कालवी ने बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, दीपक उदार ने बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक किया, लेकिन सिमरन शेरगिल आगे हैं, रक्षात्मक रूप में बैक हैंडर लगाने की कोशिश करने वाले थे। वहां दीपक उदार ने फिर से दिशा बदली। भवानी कालवी, प्लेयर्स अंपायर को इशारा दे रहे हैं कि ये बॉल मेरे हक में थी, लेकिन देखिए किस तरीके से सिमरन शेरगिल ने एक नया आक्रमण शुरू किया है बॉडीगार्ड टीम के लिए। जयसल सिंह पूरी रफ्तार के साथ बैकहैंडर लगा रहे थे, लेकिन वहां पे बॉल रुक गई है। मौका था बॉडीगार्ड टीम के पास, लेकिन दीपक उदार ने एक बार फिर और ये देखिए किस तरीके से सिमरन शेरगिल ने कोशिश की, बॉल वहीं पड़ी है, इंतजार कर रही है कि भाई कोई तो पहुंचा दे हमें अपनी मंजिल तक। और ये जयसल सिंह ने एक बार फिर बॉल को स्ट्राइक किया। देखिए किस तरीके से जयसल सिंह अटैक कर रहे हैं लांसर्स टीम के लिए। भवानी कालवी आपके सामने है, जोरदार शॉट के साथ उन्होंने बॉल को आगे बढ़ाया। सिमरन शेरगिल के सामने जयसल सिंह, और अभी भी बॉल आगे बढ़ती जा रही है। लांसर्स टीम के पास मौका है, बैकहैंडर के साथ बॉल को सीधी दिशा देने की कोशिश कर रहे थे भवानी कालवी। काफी कश्मकश चल रही है प्लेयर्स के बीच में और पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के काफी करीब। और ये देखिए किस तरीके से वहां पे समीर सुहाग ने रक्षात्मक रूप से बॉल को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अंपायर ने विसिल का संकेत दे दिया। अब देखना पड़ेगा पेनल्टी किसके हक में जाती है। 33 सेकंड का समय बाकी है दोस्तों। लांसर्स की टीम 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे है इस मैच में इस स्तर पर। Ladies and gentlemen, that whistle signaled a foul indicated by the umpires. We're just waiting for a player to return to the field. That is Bhavani Singh Kalvi, and you can see that his trainers there towards the left side of the polo field, across the field, they're wearing bright yellow turbans. And a spot hit taken and goal struck there by Jaisal Singh, and that is goal number 2 for the Lancers team. Lancers ahead with 2-0 at this stage. We are heading towards the end of the first shaka. Teams coming back to the center line. One of the unique rules of polo is that after every goal is scored, teams come back to the center line and start attacking in the opposite direction. दोस्तों पोलो के नियमों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। अभी आपने देखा कि गोल होने के बाद टीम्स वापस आ जाती है सेंटर लाइन में और विपरीत दिशा में आक्रमण करने लगती हैं। ये पहला हूटर बच चुका है, केवल 30 सेकंड का खेल बाकी है। और दीपक उदार
और समीर सुहाग के बीच में मुठभेड़ चल रही, वहां पे बॉल आगे ले जा चुके हैं, लेकिन समीर सुहाग ने बॉल को घुमा लिया। समीर सुहाग ने बॉल को घुमा लिया। सिमरन शेरगिल को जिम्मेदारी दे दी और सिमरन शेरगिल ने बॉल को आगे बढ़ाया। यहाँ पे फिर से एक बार भवानी कालवी बॉल पर आ चुके हैं। बैकहैंडर के साथ बॉल की दिशा को पलट दिया उन्होंने, लेकिन सिमरन शेरगिल वहां खड़े थे। बॉडीगार्ड के लिए दरवाजा बंद कर दिया, बॉडीगार्ड के लिए बॉल उठाई और एक ऊंची शॉट के साथ आगे किया, लेकिन इसी के साथ दूसरी विसल का संकेत और पहले चक्कर का खेल यहीं समाप्त होता है। स्कोरबोर्ड आपके सामने, बॉडीगार्ड टीम अभी अपना खाता नहीं खोल पाई है। लांसर्स की टीम 2 गोल से आगे चल रही है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा टीम्स का हौसला बुलंद करते हैं। Well, ladies and gentlemen, the first chukker concludes with the scoreboard reading 2-0 in favor of the Lancers team. The players have headed back to their team camps on the far side of the field. Many of our spectators who are new to the sport must be wondering, why have they left the field? Well, they have gone outside the field to change over to fresh horses. No horse in polo is played for 2 continuous chukkers. In fact, every horse is only played for 1 chukker during 1 polo match. So you can imagine now, each team has got 4 players. They're going to play 4 chukkers each. So every team is coming to a polo field with almost 20 to 25 horses, which includes 4 to 5 spare horses. And all of these horses are supreme equine athletes, having trained on the polo field for years and years to come and perform at this level. Players are back onto the field, getting ready to restart play. All right, looks all set. So all the players have come back to the field with fresh horses, which just should indicate to you that the team which is outside the polo field, the trainers and helpers and the saises, they're constantly warming up the horses as per their sequence. When the horse is about to enter the polo field, the horse has to be adequately warmed up to ensure that the heart rate is at the right level to instantly gallop. The ball is now underway and in play. This is Simran Singh Shergill who picks up the ball for the Bodyguard team. It is Simran Shergill being followed by Colonel Amit Bedwal. Simran Shergill now scripting an attacking move for the Bodyguard team. It's a nice long hit, but the ball is going across the center line. Sameer Suhag is there. He'll have to take a next strike. He strikes, but he tops the ball. The ball is still lying there. And it is Jaisal Singh who turns around with the ball. Jaisal Singh riding that grey horse. Jaisal strikes the ball in between all the horses. It is once again Simran trying hard. Simran, that is Naveen Jindal. And there comes the first goal for the Bodyguard team. दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री नवीन जिंदल के लिए। बॉडीगार्ड टीम के लिए पहला गोल स्कोर किया। Ladies and gentlemen, a sitting member of parliament, a sitting member of the Lok Sabha, 3-time member of the Lok Sabha, vice president of the Indian Polo Association, and Naveen Jindal has once again struck the ball hard. Naveen Jindal in attack for the Bodyguard team. He is being marked there by Deepak Udad. It is Naveen Jindal now on a flat-out gallop. He is looking good. The ball gets left behind. It's been picked up there by Simran Shergill. Simran having a chance right in front of the goal mouth, and he taps the ball through for the second one. देखा दोस्तों, मैंने आपको बोला था, सारे बच्चों को बोला था कि ताली बजाओगे तो प्लेयर्स के हौसले बुलंद हो जाएंगे, घोड़ों की रफ्तार तेज हो जाएगी। आपने हमारी बात सुनी और उसका नतीजा देखिए, खेल की रफ्तार कितनी बढ़ गई है। बॉडीगार्ड टीम ने 2 जबरदस्त गोल लगा दिए 30 सेकंड के अंदर में।
हर गोल के बाद दोनों टीमें सेंटर लाइन आती हैं और टीम्स अपने आक्रमण की दिशा बदल लेती हैं। पोलो का ये एक बहुत ही विशेष और पुराना रूल है। और एक और चीज आप देख सकते हैं कि सभी प्लेयर्स अपने दाहिने हाथ में ही पोलो स्टिक पकड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं वो भी दाहिने हाथ में ही पकड़ सकते हैं। ये समीर सुहाग ने लंबी शॉट लगाई, समीर सुहाग को मार्क कर रहे हैं वहां दफेदार सुखजीत। समीर सुहाग के पास मौका था, बॉल वहां पड़ी हुई है, सुखजीत के पास मौका है, बैक हैंडर लगा दिया, उन्होंने बचा लिया मौका लांसर्स टीम के लिए। दफेदार सुखजीत ने बॉल की दिशा पलट दी और अब जयसल सिंह फरियाद पेविलियन के सामने एक्शन में है। जयसल सिंह लांसर्स टीम के लिए बॉल को उठाने की कोशिश की थी, दीपक उदार ने शॉट लगाई, दीपक के पास बॉल है और एक और मौका है, उन्होंने फिर कोशिश करी, दीपक उदार के पास बॉल है। देखिए किस तरीके से घोड़े साइड बोर्ड को टाप के बाहर और अंदर चले जाते हैं। और ये देखिए दीपक ने कोशिश करी लेकिन बॉल अभी भी वही है और फिर भी फील्ड के अंदर है। मौका था वहां पे सिमरन शेरगिल और भवानी कालमे के बीच में कशमकश चल रही है। और अब समीर सुहाग के पास बॉल, गोल माउथ के सामने से उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, जयसल ने वहां बैक हैंडर लगाया और एक बार फिर नवीन जिंदल बॉल के पास ही थे लेकिन अब समीर और सिमरन शेरगिल ने अब बॉल को पकड़ लिया है। सिमरन शेरगिल के पास बॉल है, सिमरन से बॉल छूट गई। भवानी कालवी के पास मौका, बॉल छूट गई सिमरन से, भवानी कालवी ने बॉल को अपने कब्जे में कर लिया है, आक्रमण कर रहे हैं, भवानी के पास बॉल है, बॉल गोल की तरफ बढ़ रही है, बैक हैंडर लगाया सिमरन शेरगिल ने, अभी भी बॉल मैदान में थी और सिमरन शेरगिल ने बॉल को अब आगे बढ़ा दिया है। समीर सुहाग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ये देखिए कर्नल बेरवाल और समीर सुहाग ने शॉट लगाया और बॉडीगार्ड टीम के पास मौका है एक और गोल करने के लिए। समीर सुहाग के ठीक बगल में चल रहे हैं भवानी कालवी, समीर सुहाग ने अपनी बाईं तरफ से बॉल को और आगे बढ़ाया लेकिन निशाने से थोड़ा सा चूक गए। देखिए कितनी रफ्तार से खेल आगे बढ़ा अपने निशाने की तरफ लेकिन थोड़ा सा चूक गए। दोस्तों पोलो के खेल की ये खासियत है कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, लेकिन आपकी तालियों की गूंज ना केवल बढ़नी चाहिए, ये याद रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब दर्शक खेल में पूरी तरह छा जाते हैं और आप अपने दिलों से जब अभिवादन करते हैं प्लेयर्स का तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब हिट इन लेने वाले हैं लांसर्स टीम के लिए जयसल सिंह। Ladies and gentlemen, Jaisal Singh, easy to recognize at this stage because he is mounted on a grey horse. In horse terminology, there's nothing called a white horse. We call them grey horses because all across the world, one of the unique features is that the horse, when it is born, it is dark grey and sometimes even jet black in color. And over the years, then the horse keeps shedding its coat from dark gray to light gray, downward, and finally the coat becomes a pure white. The horse is referred to as a gray horse. There is a breed called Lipizana, which is famous for this very genetic speciality. They are born almost jet black, but by the time they reach 10 years of age, they become pure white. खेल में थोड़ी सी रुकावट है, वेट कर रहे हैं अंपायर के संकेत का। यहां पे आए हुए सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों भारतीय सेना में, क्योंकि हम आज यहां राष्ट्रपति अंगरक्षक परेड ग्राउंड पर उपस्थित हैं, तो इसलिए भारतीय सेना और राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट की भावनाओं के बारे में आपको बताना चाहेंगे। हमारी सेना में हम घोड़ों को जानवर नहीं मानते, हम घोड़ों को अपना साथी मानते हैं। और इसी वजह से पोलो की दुनिया में जब हम बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि हम घोड़ों पर पोलो खेल रहे हैं, हम कहते हैं कि हम घोड़ों के साथ पोलो खेल रहे हैं। और देखिए एक बार फिर अब यहां पे मौका था बॉडीगार्ड टीम के पास, लेकिन फिर से भवानी कालवी के पास बॉल पहुंच चुकी है। भवानी कालवी बॉल को अपने काबू में रख रहे हैं
और ये सिमरन शेरगिल ने बॉल को पकड़ लिया। सिमरन शेरगिल गोल माउथ के ठीक आगे, और इसी के साथ तीसरा गोल स्कोर कर दिया बॉडीगार्ड टीम के लिए। 2 मिनट का खेल बाकी है अभी दूसरे चक्कर में। Teams coming back to the center line, ladies and gentlemen. As I just mentioned, in the world of polo, we never say that we play polo on horses. We always say that we play polo with horses. For us, a horse is our partner, our lifelong friend, and we play this game with horses. And you can see that the players and their mounts are equally involved and committed to the action on the field. A whistle by the umpire, there's a slight stoppage, the umpire signaling a foul. Now you can make out that all the horses have their tails tied up, except the umpire's horses. Well, this is one of the features that you'll commonly see in a polo match. That is to ensure that when a player takes the swing of his mallet, the mallet should not get entangled in the tail of the horses. That's why when a horse is trained to become a polo pony, he or she is also trained to have the tails tied up for the duration of the game. This is Simran Shergill now taking a free hit for the Bodyguard team. It is Simran Shergill. Simran overriding, the ball gets left behind. Deepak Udar was there, he leaves the ball for Bhavani Kalvi. Now Bhavani Kalvi quickly pouncing on the ball, he strikes, and look at the pace, the horses are going neck and neck. It is Simran Shergill now getting ready for a backhander. A backhander at a flat-out gallop, and he passes the ball to Samir Sohag. Samir Sohag picking up the ball. That is Samir Sohag on the ball now. Samir Sohag tapping. Once again, Deepak Udar dispossessing him from the ball. Samir trying for a backhander, doesn't connect, and the ball still gets left behind. A slight touch on the ball, and it is Bhavani Kalvi. Look at that horse just turning around on a penny. What an... Oh, while he was wearing a swing, and we have a backhander from Simran Shergill. Once again, an opportunity here. The ball is shifting back and forth in possession between the two teams. A whistle there. So, dear spectators, one of the unique rules of modern polo is that a polo player has to hold the stick in the right hand. Many polo players in the world are left-handed players for their normal life, born left-handed. But if a person decides to take on this game, then they have to learn how to hold the polo stick and play polo with a polo stick in the right hand. A unique rule of the sport. The other one, of course, which you've been seeing all through so far, is that after every goal is scored, the teams change end and start attacking in the opposite direction. This is one of the oldest rules of modern polo. Modern polo was discovered in the highlands of Manipur in the 1850s. And that is when it was observed that one set of horses, because the fields had an inclination in the highlands of Manipur, and one set of horses were always galloping upwards. We'll get back to that story. This is Jaisal Singh getting ready to strike the penalty for Lancers team. He strikes, the ball has gone straight through, and that is the equalizer. So with just 20 seconds to go for the first hooter in this second chakra, scoreboard reading equal at 3 goals each. So in the highlands of Manipur, when a team of horses had to gallop uphill, the workload on the horses was shared by making sure that after every goal was scored, the teams had to change end and attack in opposite directions. That's why even today, after every goal is scored, teams have to change ends and attack in the opposite direction. So with that whistle, the umpires have signaled the end of chakra number 2, and we'll take a short half-time break of 5 minutes. In the meantime, ladies and gentlemen, if you look towards your left side, the military band from the Rashtrapati Bhavan, the military band from the Artillery Center, Hyderabad, is now coming onto the polo field to perform a display of martial tunes before you. The band is led by bandmaster Naib Subedar Jaipal Yadav. और ये देखिए दर्शकों, राष्ट्रपति भवन का मिलिट्री बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर नायब सूबेदार जयपाल यादव.
अब अपने बैंड डिस्प्ले के लिए तैयार हो गया है और फरियाद पेविलियन के सामने आने वाला है। हम बार बार ये नाम ले रहे हैं, फरियाद पेविलियन। ये फरियाद नाम के पीछे इतिहास क्या है? किसने की थी फरियाद? इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन अब आइए देखें राष्ट्रपति भवन का मिलिट्री बैंड। दोस्तों, ये धुन इतनी ऐतिहासिक धुन है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हौसले बुलंद हो जाते हैं। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सभी दर्शकों से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। राष्ट्रपति भवन का मिलिट्री बैंड आपके सामने है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दोस्तों, 1942 में डॉक्टर वंशीधर शुक्ला जी ने इस धुन की रचना की थी और आज तक ये धुन सभी भारतवासियों के सीने में जीवित है।
gentlemen, this martial tune is called Salam to the Soldiers. देवी और सज्जनों, आज से 120 साल पहले 1904 में मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं सभी गुलिस्तान हमारा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि तालियों के साथ मिलिट्री बैंड का अभिवादन करें। इन्होंने आपके सामने एक भव्य प्रदर्शन किया है। Right, the teams are now ready to commence action on the polo field. If you look at the scoreboard, we can see a triple Nelson on the scoreboard. Third chukker about to start, 3 goals each. The scoreboard reading even Steven with 3 goals each, and the ball is underway now in play with Jaisal Singh striking the ball for the Lancers team. Jaisal Singh in attack, he's being marked there. Jaisal getting marked by Samir Sohag. Jaisal strikes the ball gets left behind, and now we have Bhavani Kalvi on the ball. Bhavani playing nice and aggressive polo. Bhavani strikes. It's a good-looking shot. A chance there. Simran Shetty right in front of the goal mouth. Just saves the ball from the danger zone. Simran Shetty taking the ball away from the danger zone toward the far side. Look at the pace now. Oh, that's a nice new pace. Look at the way the horses are stretching out. It is Simran Shetty being marked by Dafadar Sukhjit Singh of the President's Bodyguard. It is Naveen Jindal on the ball. And the ball takes a big bounce and gets left behind. Samir Sohag. Samir Sohag picks up the ball. It's in the deep corner. Samir Sohag will have to turn the ball in towards the goal mouth. It is still with Samir Sohag. He's being marked by Bhavani Kalvi. Right behind him, it is Samir Sohag with an opportunity. Bhavani Kalvi on the ball. Trying to take a backhander. He strikes a backhander. The ball goes back towards the sideboards. And it is Dafadar Sukhjit once again. Strikes and takes the ball away. A backhander struck by Naveen Jindal. And we have Bhavani Kalvi. Bhavani Kalvi gives a nice pass to Jaisal Singh. Jaisal strikes, and look at that beautiful polo horse giving everything to Jaisal Singh. And Simran Shetty now approaching to defend at a flat-out gallop. That is the unique thing about polo, ladies and gentlemen. Polo is a sport. Oh, a chance there. Bhavani Kalvi right in front of the goal mouth. He taps the ball through. It's goal number 4. Goal number 4 on the scoreboard for the Lancers team. Polo is one sport where there is nothing called defensive tactics. Yes, you heard me right. There is nothing called defensive tactics in polo. In fact, when you have to defend, the player has to be at a flat-out gallop. And the only defensive strike can be a backhander. Ball in play. Samir Sohag strikes, opens the play towards the center line. It is Simran Shetty getting marked there by Bhavani Kalvi. Simran with a near side pickup. And a strike by Deepak Udar, but the ball gets left behind. Samir back on the ball. Players still struggling to maintain possession. They're fighting hard, and that's the reason why the ball keeps switching between the two teams. It is now Simran Shetty in attack. Simran in attack for the Bodyguard team. He's keeping a bouncing ball in control. Naveen Jindal strikes. It's a nice looking strike by Naveen Jindal. And it is goal number 4, the equalizer coming from Naveen Jindal.
4 minutes of play left in this third chakra. Fourth goal scored for the Bodyguard team, and the second one by Naveen Jindal. Ladies and gentlemen, the entire polo community of India is very proud to have Mr. Naveen Jindal, who's a sitting member of the Lok Sabha, playing at the national level in this sport. And there's one thing which very few spectators know. Mr. Naveen Jindal is also a national record holder in skeet shooting, having that record in his name for over 30 years now. It's a nice strike by Bhavani Kalvi. Simran Shergill with an opportunity to defend. He's going to take a backhander. Yes, it's a nice long backhander. Look at that backhander. 80 yards on that ball. Bhavani Kalvi once again decides to turn around. Sameer Sohag is right there. Bhavani just indicating for some space because he doesn't want to take a strike where that might hit a player or a horse. It is Bhavani Kalvi now in attack for the Lancers team. Bhavani with the next shot. The ball takes a deflection from Simran. Bhavani trying to straighten the ball out, but the ball goes over the back line and out of play. That is going to be a hit-in for the Bodyguard team. Simran Shergill getting ready to strike the ball from the back line for the Bodyguard team. Time is ticking by. In a polo match, the clock stops only when the umpire sounds the whistle. The clock does not stop if the ball crosses the back line or a goal is scored or anything may happen. The clock stops only when the umpire blows the whistle. You can see that the horses are picking up pace now. This is Simran Shergill in attack. Simran overriding the ball. The ball gets left behind, but Sameer Sohag with his experience was in the right place at the right time. Sameer strikes, gives a nice open pass to Simran Shergill, opens up the play towards the center line. It is Simran now. Look at the way he was leaning. Oh, but unlucky, missing out on that opportunity. And a backhander struck by Bhavani Kalvi. It's a lovely backhander from Bhavani Kalvi. He's given a pass to his team captain Jaisal Singh, unfortunately missed striking. And Bhavani's back on the ball. This is the teamwork between these two players. You can see one hits the ball up, the other one tries to take a strike, and they are backing each other up. Bhavani once again with the ball in front of him. It is still Bhavani Kalvi riding that grey horse. Bhavani taking the ball up in bits and pieces. Marked there by Naveen Jindal. Loses the ball for a moment, and Simran Shergill dismounting after that signal from the umpire because one of the bandages came loose from his polo horse. That is a matter of safety. So ladies and gentlemen, for your information, any situation that leads to danger or that compromises safety of horses or the safety of players results in a stoppage in play. In this case, this was not a foul. It was just that a piece of equipment of the polo horse came loose. This is something that happens. And the umpires are always watchful to make sure that the play stops when something like this happens. Now, one of the unique rules of polo is that what happens if a player has a fall? Well, you'll be surprised to know that if a player has a fall, the game does not come to a stop. Yes, you heard me right. If a player has a fall, the game does not come to a halt unless the umpire sees that the player is in danger. The umpire will blow the whistle, and only then will the game come to a halt. However, if a horse has a fall, then the game comes to a halt automatically. That is because the safety, well-being, and welfare of our horses is paramount. So I'll repeat this once again for the benefit of our spectators, that during any polo match, if a player has a fall, the game does not automatically come to a halt until the umpire signals. But if a horse has a fall, and that technically happens if the shoulder of the horse touches the ground. If a horse has a fall, it means the horse's shoulder should have touched the ground. If that happens, then the game comes to a halt automatically. The umpires asking the teams to line up for a throw-in. The game is going to restart with the throw-in now. Colonel Navjeet Sandhu asking the players to line up. The second umpire, Major Raghavraj Singh, who's also the captain of the infantry polo team. And Raghavraj this time throws in the ball. The ball is now with Bhavani Kalvi. Bhavani strikes, passes the ball. Oh, he's hit the ball through that group of horses. Deepak Udar has a chance for the Lancers team. Deepak trying for a pickup. Sameer Sohag with a nice neck shot.
Takes the ball away from the danger zone. Deepak is still there, trying for a backhander, keeping the ball in play. Sharp turnaround done by Bhavani Kalvi. Bhavani Kalvi and Sameer Sohag trying really hard for that tussle. It is Simran Shergill trying to keep the ball in play. Is right next to the back line. Dafidar Sukhjeet with a backhander strikes it long. What a nice pass given. The play is still underway. And players converging on the ball. That is very, very tricky. But there's no motion on the ball. Bhavani strikes. Deepak strikes with the backhander. The ball still in front of the goal mouth. And Bhavani gives the final touch. That is goal number 5 for the Lancers team. And you can see Colonel Navjeet Sandhu, the umpire, riding back towards the center line of the field. Teams heading back towards the center line. Why are the horses not galloping towards the center line? Well, that is the rule in polo, that once a goal is scored, the horses are to be cantered back at a slow canter. Everybody must catch a breath. And horses must enjoy the game. They must enjoy the game as much as the players. And look at that nice pick up there. This time it is Simran Shergill who is quick off the block. Simran is being marked by Bhavani Kalvi. It is Simran Shergill now in attack for the Bodyguard team. It is Simran Shergill in attack for the Bodyguard team. It is Simran Shergill all the way. Oh, it's a backhander. What a timely backhander by Bhavani Kalvi. And now it is Deepak Udar. Deepak Udar on the ball, just overriding Simran once again, creates an opportunity for the Bodyguard team with the backhander. Another backhander by Bhavani Kalvi. What pace, the ball is changing direction. Bhavani Kalvi, who has represented India in 3 Polo World Cups and has also played the nationals in basketball as well as in shooting. And there's a whistle. That is the end of Chakra number 3 with the scoreboard reading 5-4 in favor of the Lancers team, and the players heading back to their respective teams to change over to fresh horses. Ladies and gentlemen, there'll be a short break of 3 minutes before we see the players returning back to the field. I'm quite sure that all of us who are fortunate to be present here in the heart of the national capital, here at the President's Bodyguard Parade Ground, are feeling fortunate and delighted to be witnessing this special polo match. And like I mentioned to our spectators earlier in the afternoon, after conclusion of the polo match, we are going to have a very unique and special display of mounted sports by the crack riding team of the President's Bodyguard. Ladies and gentlemen, it is indeed our good fortune to be here in the lap of nature to enjoy these beautiful settings, the pristine environment. सभी दर्शकों के लिए एक सवाल है, जरा ध्यान से जवाब दीजिएगा। आपको मजा आ रहा है? आवाज सुनाई नहीं दी भैया। मजा आ रहा है ना? देखा दोस्तों, यहां तो मतलब जिस भी दिशा में देखो पेड़ चमक रहे हैं, हर चीज चमक रही है, कितना उजाला है, हवा इतनी साफ है। हवा इतनी साफ है, लोग तो यहां सोच रहे हैं कि हवा इतनी साफ कैसे हो गई। कुछ हफ्तों पहले तो दिल्ली में थोड़ी दिक्कत थी, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हवा इतनी साफ कैसे हो गई, इसका श्रेय किसको जाता है? पता है आपको किसको जाता है? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये हवा को साफ करने का श्रेय दिल्ली वालों को जाता है, जिन्होंने लंबी लंबी सांस लेके हवा को ही साफ कर दिया। Well, ladies and gentlemen, all the Delhiites are feeling very challenged these days because we are not used to such clean air. We are not used to so much of oxygen. But we're absolutely and truly grateful to the Honorable President of India. It is because of her permission and her motivation that we are truly blessed to be here in the heart of the national capital, to be enjoying this beautiful afternoon in the lap of Mother Nature. Players back onto the field, and they're all set now. Stakes are higher. This is the 4th and final chakra of the match.
सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया मैदान के बाहर जाइए। ट्रैक मार्शल, ladies and gentlemen, the ground is now being reset for the mounted sports display. We will first have a trick riding display followed by a trick show jumping display. You can see the team from the President's Bodyguard coming onto the field to set up the obstacles for the trick show jumping display and also the devices for the trick riding display. सभी दर्शकों से निवेदन है, आप कृपया अपने स्थान पर बने रहिए। हमें मालूम है कि आपके दिल में उत्साह की लहरें जागृत हैं और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, हौसले बुलंद हैं सबके। लेकिन अब जो प्रदर्शन आपके सामने होगा एक बहुत ही विशेष और खतरनाक प्रदर्शन है। राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट हमारे देश की सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है, भारतीय सेना की सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है, जिसका गठन आज से 251 साल पहले 1773 में हुआ। और जो प्रदर्शन आज आप देखेंगे उसके सबसे विशेष बात क्या है, ये कौन से घोड़े हैं जो ये प्रदर्शन करने वाले हैं। दोस्तों, आप हैरान होंगे इस बात को जान के कि ये वही घोड़े हैं जो 26 जनवरी की परेड पर आप कर्तव्य पथ पर जिनको देखते हैं, बीटिंग रिट्रीट के समारोह के दौरान विजय चौक पर आप इनको देखते हैं। और राष्ट्रपति अंगरक्षक की ये अश्व योद्धा एक साल में तकरीबन 60 बार समारोहिक परेड पर तैनात होते हैं। ये वही घोड़े हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक की अश्व योद्धा जो आज आपके सामने एक बहुत ही जोखिम भरा प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी माता पिताओं से निवेदन है, अपने बच्चों को अपने साथ रखिए। Ladies and gentlemen, the track is being set. We will begin the mounted sports display by a display called the trick riding display. Well, we call it a trick riding display, even though there are no tricks. The thing is that the effort and the performance is so magical that for an ordinary person it's difficult to believe that what is happening in front of you is not magic, it is the reality of hard work, training and dedication. ये जितने भी दर्शक मैदान के साइड बोर्ड के पास हैं, आप लोग पीछे हो जाइए। So ladies and gentlemen, we are all set now for the commencement of the trick riding display. If you look towards your left side, you can see the riders of the President's Bodyguard, the Indian Army's senior most regiment and the world's only airborne cavalry regiment is ready. That was Lance Dafedar Sumit Kumar giving the signal as the track marshal. Here come Naib Risaldar Deepak Kumar with the national flag. Naib Risaldar Jitendra Singh astride Gaurav, Dafedar Manjinder Singh astride Vargo and Lance Dafedar Sukhdeep Singh, 3 horses. दोस्तों ध्यान से देखो, लाल दफेदार सुखदीप सिंह एडमिरल घोड़े पे सवार थे और उनके हाथ में 2 और घोड़े। जी हां, ये जादू नहीं, ये सच्चाई है। राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट के जांबाज सवार ऐसे करतब आपको दिखाएंगे कि आपकी आंखें चौकन्ना हो जाएंगे आप। ये देखिए किस तरीके से अब घोड़े अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस जा रहे हैं। अब आपके सामने प्रदर्शन करेंगे रिंग एंड पेग का। और मैदान पे अब उतर आए हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल। इनकी घोड़ी का नाम है विराज, इनके हाथ में है लांस और पहले इन्होंने रिंग को पार कर दिया और दूसरी को भी चीर दिया और अब पेग भी उठा लिया और एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। दोस्तों, ये थे कर्नल अमित बेरवाल, कमांडेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। अब आपके सामने
एक ऐसा प्रदर्शन होगा जो हमारे देश में केवल ये रेजिमेंट कर सकती है। सवार नरेंद्र विशाल सिंह उनके पीछे, और ये देखिए किस तरीके से होगा। सवार नरेंद्र राघव और सवार विशाल सिंह का ये करतब, इसको डेकॉइट शूटिंग कहते हैं। घोड़ा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और सवार लटक चुके थे सैडल से। देखने में कितना आसान लगता है दोस्तों। And now we have a demonstration of triple tent pegging. Naib Risalda Deepak Kumar, Naib Risalda Jitendra Singh. They take up the second one with the sword, and now they're going. What a performance attacking. That was a double attack, an attack in pair by Naib Risalda Deepak Kumar and Naib Risalda Jitendra Singh. You can now see that a hanky is being placed on the ground. We will now have the senior most horse in this display coming onto the field. Dafadar Manjinder Singh will be riding a horse called Virgo. It's a 16-year-old horse of the President's Bodyguard, one of their senior most horses participating in the demonstration of mounted sports. दोस्तों, जो घोड़ा अब आपके सामने आने वाला है, वो इस प्रदर्शन का सबसे वरिष्ठ अश्व योद्धा है। 16 साल की उम्र का घोड़ा है, उसका नाम है वर्गो। घोड़े पे सवार है दफदार मनजिंदर सिंह। मैदान पे एक रुमाल को रखा गया है। इतना खतरनाक प्रदर्शन आज की आधुनिक दुनिया में क्यों किया जाता है, ये सवाल हमारे मन में, सबके मन में उठता है। ये देखिए दफदार मनजिंदर सिंह आ गए वर्गो पर, और इनके हाथ से शाबाशी देते हुए लटक के उठा लिया, उठाने की कोशिश की, और ये एक हाथ से रुमाल उठाया, दूसरे से उनके हाथ से पक्षी उड़ा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। आपको उन्होंने एक प्रदर्शन दिया है अपने पूर्वजों की प्रथा का। आज से सैकड़ों साल पहले मैदान जंग में, युद्ध भूमि में जब रिसाला आक्रमण करती थी और रिसाला के सवारों के हाथ से अस्त्र शस्त्र जब जमीन पे गिर जाते थे तो क्या करते थे? घोड़े की रफ्तार कम तो कर नहीं सकते, घोड़े की रफ्तार कम नहीं कर सकते तो झुक के उठाना पड़ेगा अपने अस्त्रों को। एक्टिंग लांस दफेदार हरदेव सिंह, इनके घोड़े का नाम है एडमिरल। 10 साल का घोड़ा है एडमिरल। ये हरदेव ने उठाया पहला, दूसरे से चूक गए, और ये तीसरा। That is a very, very strong performance by acting Lance Dafedar Hardev Singh. Acting Lance Dafedar Hardev Singh was riding a horse called Admiral, and that horse is 10 years old. We now have a demonstration of cross tent pegging from your right side. आपके दाहिनी तरफ से आ रहे हैं एक्टिंग लांस दफेदार हरदेव सिंह। एडमिरल पर सवार बाएं साइड से नायब रिसालदार जितेंद्र सिंह गौरव पर सवार, और एक दूसरे की तरफ पूरी स्पीड पे आएंगे, तैयार हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से घोड़े इंतजार कर रहे थे सिग्नल का, और ये आ गए नायब रिसालदार जितेंद्र सिंह बाईं तरफ से, दाहिनी तरफ से एक्टिंग लांस दफेदार हरदेव सिंह, और ये क्रॉस टेंट पेगिंग के लिए एक दूसरे की तरफ आक्रमण करते हुए। सांस रुक जाती है दोस्तों, ऐसा होता है, नॉर्मल है। लेकिन सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, घर जाके ये सब काम करने की कोशिश मत करिएगा। ये केवल राष्ट्रपति अंगरक्षक के जाबाज सवार ऐसे खतरनाक प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे जैसे साधारण लोग तो सपने में भी, हमारे लिए तो सपने भी देखना खतरनाक है, ये बिस्तर से ही गिर जाएंगे। ये देखिए अब आ गए आपके सामने राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित देरवाल। इनकी घोड़े का नाम है विराज, और तलवार से उड़ा दी पहली हांडी, और बाईं साइड से दूसरी, और ये लेके चले गए विराज को। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसी के साथ ट्रिक राइडिंग प्रदर्शन का अंत हुआ, और आपके सामने इतने विशेष घोड़े आए। वो देखिए, अगर आप अपनी दाहिनी तरफ देखेंगे, वहां कर्नल बेरवाल उस विशाल घोड़ी पर वापस आ रहे हैं। इस घोड़ी का नाम है विराज। 12 साल की घोड़ी है, परेड भी करती है, अभी पोलो भी खेल रही थी, अभी ट्रिक राइडिंग भी किया।
इस घोड़ी का परिचय कितना विशेष है। और अब आपके सामने शो जंपिंग की शुरुआत कर रहे हैं सवार अजय कुमार, विरासत पर सवार और हाथ में है गगन, एक घोड़े पे सवार और दूसरे घोड़े की ट्रेनिंग देख लो। What a demonstration, ladies and gentlemen. That was Savar Ajay Kumar, and now we have Savar Krishan Kumar astride Vikramaditya. Vikramaditya is a 12-year-old horse of the President's Bodyguard. Savar Krishan Kumar is now coming around. He is going to first take on the brush jump, and those are two real vehicles. और जिप्सी के ऊपर से दोस्तों जरा जोरदार तालियां हो जाए, ये असली गाड़ियां खड़ी हैं। आप सोचिए कितना जोखिम है। मैं अब बग्गी की तरफ मुड़ के आ गए और घोड़े के ऊपर से घोड़ा, तलवारों के ऊपर से और मोटरसाइकिल के ऊपर से, और अब तीसरे सवार आ चुके हैं मैदान पे, दफेदार यादराम। दफेदार यादराम के घोड़े का नाम है अवतार। Very, very disciplined and special horse, Avatar. When on parade, he carries the colors of the President's Bodyguard, and look at that. What a confident clearance over the two vehicles position. These are all real obstacles. Why in today's modern age do military horsemen demonstrate these skills? The reason being that war horses are trained to be war horses. Ladies and gentlemen, we live in an age of artificial intelligence, but courage must always be real, because artificial courage has no value, and real courage must come from within. Real courage is developed. It must come from within. It takes years and years of training and practice and dedication, and this is Dafadar Mandeep Singh astride Ganga. Dafadar Mandeep Singh astride Ganga. She's a very powerful mare of the President's Bodyguard. Clears, and a confident clearance over the motorcycles also. And now we have Colonel Amit Beval, the Commandant of the President's Bodyguard, leading by example. He has come onto the field astride a horse called Absolute. All of these horses of the President's Bodyguard are the ones that we see on the Kartavya Path on the 26th of January each year, taking part in the Republic Day Parade. These war horses, they do parades, they do equestrian sports, they play polo, and like the soldiers of the President's Bodyguard, they too are multifaceted specialists in so many fields. Colonel Amit Beva clearing the buggy over the swords and has a touch on the bike. Just shows you things can happen. That is a real motorcycle. That touch was a real touch. दोस्तों आपने देखा क्या हो सकता है? ये जोखिम असली है। और अब कर्नल अमित बेरवाल टीम के नेतृत्व में आगे आग के ऊपर से निकलते हुए, और देखिए किस तरीके से अंतिम चुनौती को पार किया टीम ने। Crossing fire, going through fire, these are all training elements which have been the heritage of the Indian Cavalry forces. Please give a round of applause to the team that performed the trick riding and the show jumping display. The teams are being led by Colonel Amit Bedwal. The President's Bodyguard has won 152 medals in the last 2 years at the national level in India. 152 medals in the Army Equestrian Championship and the National Equestrian Championships. President's Bodyguard creating new benchmarks every year, every season. और इसी के साथ ट्रिक राइडिंग और ट्रिक शो जंपिंग का प्रदर्शन यही समाप्त होता है। सभी दर्शकों से निवेदन है आप अपने स्थान पर बने रहें। कुछ ही समय में पुरस्कार वितरण समारोह होगा। सभी दर्शकों से एक बार फिर निवेदन है, कृपया अपने स्थानों पर बने रहें। Ladies and gentlemen, in a short while from now,
we will have the prize distribution ceremony. All spectators are requested to kindly remain seated. Ladies and gentlemen, I request all spectators please remain seated.
सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बने रहें। पुरस्कार वितरण के दौरान जब पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया जोरदार तालियों के साथ खिलाड़ियों का और प्रदर्शनकर्ताओं का अभिवादन करें। देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, कितना अच्छा माहौल था, कितना सौभाग्य रहा हम सबका कि आज भारत की राजधानी के बीचों बीच यहाँ हम सब उपस्थित हुए और राष्ट्रपति जी के पोलो मैच को हम सब ने देखा। सभी दर्शकों, खिलाड़ियों और राष्ट्रपति अंगरक्षक के सवारों और अश्व योद्धाओं की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके आज्ञा और प्रोत्साहन की वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप आभार व्यक्त करें। Ladies and gentlemen, we now begin this presentation first by inviting the match officials of the President's Polo Cup 2024. To begin with, I'd like to invite the match umpires, Colonel Navjeet Singh Sandhu, former Commandant of the 61st Cavalry. Major Raghav Raj Singh. Major Raghav Singh is from the Territorial Army. Major Raghav Raj Singh is also the captain of the infantry polo team. The match referee, Mr. Jay Shergill. And now the players of the runners-up team, the Lancers team, began the game with a furious couple of goals, but eventually they ended up as the runners-up in the President's Polo Cup this year. Playing at number 1, we had Dafadar Sukhjeet Singh, President's Bodyguard. Mr. Deepak Udar. Mr. Deepak Udar, apart from being a polo player, is also a World Youth Championship medalist in Taekwondo. Mr. Jaisal Singh, industrialist, author, nature conservator, and so many more facets to his personality.
the man who led the Lancers team with fire and fury, Bhavani Singh Kalvi. And now players of the winning team, the Bodyguard team, which won this match by 6 goals to 5. I'd first like to invite the Arjun awardees, Mr. Sameer Sohag, one of the finest and most respected players of India. Mr. Simran Singh Shergill. इनके घोड़े की रफ्तार देखी थी ना आपने? जरा तालियां हो जाए. The man who turned the fortunes around for his team, Simran Singh Shergill, one of the finest in our nation. And now, one of the senior-most players of the Indian Polo community, the Vice President of the Indian Polo Association, and a sitting member of the Lok Sabha, Mr. Naveen Jindal, a 3-time member of Lok Sabha. He is also a national record holder in skeet shooting, holding that record for the last 32 years. Ladies and gentlemen, polo is the only sport where the senior leadership of our National Sports Federation, the Indian Polo Association, plays the sport at the highest level in our country. And finally, the captain of the Bodyguards team, Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Berwal. May I now request players of the winning team to please step up on the stage to receive the trophy. Mr. Sameer Sohag, Mr. Simran Singh Shergill, Mr. Naveen Jindal, and Colonel Amit Berwal. May I request both the teams, the Bodyguard team and the Lancers team, could you please come onto the stage for a photograph to commemorate the occasion? So, ladies and gentlemen, as I mentioned during the match, in a polo match, we never call a team that loses as losers. Because if you have it in you to perform on a polo field, you're not a loser. You may win the match or you are the runners-up. We now move on to the participants of the mounted sports. I'd like to begin with the participants of the trick riding team. सभी दर्शकों से निवेदन है, जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए ट्रिक राइडिंग टीम के सदस्यों का। नायब रिसालदार दीपक कुमार राष्ट्रपति अंगरक्षक के जांबाज सवार हैं। नायब रिसालदार दीपक कुमार, नायब रिसालदार जितेंद्र सिंह, दफेदार मनजिंदर सिंह, लांस दफेदार सुखदीप सिंह,
Acting Lance Dafedar Hardev Singh. Acting Lance Dafedar Hardev Singh was riding a very special horse called Admiral, a 10-year-old horse. So that technically makes him the youngest admiral in the world. Sawar Narinder Raghav. Sawar Rishal Singh. And the captain of the trick riding team, Colonel Amit Berwal, Commandant President's Bodyguard, who's also won a silver medal in the Army Equestrian Championship in 10 pegging. We now have members of the show jumping team, Dafedar Yadram, all of these riders of the President's Bodyguard have won a large number of medals at the Army Equestrian Championship. Dafedar Mandeep Singh, Sawar Krishan Kumar, और जो दो घोड़ों पे आए, सवार अजय कुमार. He was riding one horse and holding another in the hand. And the captain of the trick show jumping team, Colonel Amit Berwal. Ladies and gentlemen, to conduct such a special occasion and to celebrate the President's Polo Cup, we are deeply grateful to our supporting officials. I'd like to invite the Commanding Officer of Military Veterinary Hospital, Colonel Neeraj Gupta, for providing the veterinary cover for all the war horses of the President's Bodyguard and the participating polo horses. Ground NCO, Dafedar Sarabjit Singh Chima. Ground JCO, Risaldar Mukesh Dalal. Training NCO, Lance Dafedar Sumit Kumar. And the official commentator, yours truly, Sharad Saxena. Ladies and gentlemen, and now we would like to have a very special presentation which has never happened on this iconic setting, on this iconic parade ground. The President's Bodyguard Parade Ground has been the training ground of the war horses of the President's Bodyguard for over 100 years. You can see the name Faryad written there of the national champion, Faryad, who crossed 195 centimeters, the highest jump ever crossed in India. It happened on the 4th of April 2004. But today we shall witness the Honorable President of India awarding a special jewel, a blanket, to one of the finest war horses of the world's most elite and the world's only airborne cavalry regiment, this war horse, a mare called Viraj, which means royal.
in English language. She is 12 years old. She plays polo. She does dressage. She does show jumping. She does tent pegging. And she also takes part in every parade of the President's Bodyguard. Can you imagine? The horse does tent pegging, show jumping, dressage, polo, and over 60 ceremonial parades every year. If you ever get the opportunity, please come and see this horse from close. देवी और सज्जनों, हमारे देश के इतिहास में और राष्ट्रपति अंगरक्षक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अश्व योद्धा को ऐसा विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी के बहुत आभारी हैं। Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बने रहें। Ladies and gentlemen, please remain in your positions.